At least 10 people are feared dead after torrential rain and cloudbursts triggered flash floods across Jammu and Kashmir on Sunday, with several others still missing as rescue operations continue. The worst hit was Poonch district's Pirpanjal Valley, where floods swept through homes in Lower Murray in Buflias, part of Surankote Tahsil. Officials said 4 more missing civilians are still being traced. Locals said this is the first flood of this scale to hit Surankote since 1992. Separate incidents were also reported nearby. A woman died when her house collapsed in Poonch's Haveli Tahsil, and an 18-year-old girl drowned in a swollen stream in the same district. बारिश की वजह से ये पुल 2025 का बह गया था। उसके बाद बोल रहे थे कि इसको जल्दी से जल्दी हम बनाएंगे। उसके बाद इधर कोई आया ही नहीं, तब से ये बंद पड़ा। लोगों को परेशानी है, कोई बीमार होता है, लेडीज इतनी खज्जल हो रही हैं, कुछ लोग नीचे जा रहे हैं, कुछ इधर ही आगे पीछे घूम रहे हैं। लोगों को नहीं करवास हो रहा है ये पानी। डर तो बहुत है, हमारे इधर बहुत डर हो गया इसका पानी पुल की वजह से। लोग इधर ही रहते हैं, रात को भी ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं इधर। In Rajouri town, flash floods following overnight rain forced hundreds of residents to move to safer ground, with floodwaters inundating low-lying areas, including the town's new bus stand. Police and the State Disaster Response Force rescued at least 14 people stranded in swollen rivers across Jammu and Rajouri, including 3 boys pulled from the Tavi River near Pir Kho Temple in Jammu after a sudden rise in water levels. देखिए, इसमें पहले भी लास्ट नाइट भी हमने अलर्ट मैसेजेस फैलाए थे। हमारी सभी टीम्स कल रात से ही एक्टिव थी। हमें मालूम था कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। कम से कम 150 फैमिलीज को पहले ही लो लाइंग एरिया से इवैक्यूएट किया जा चुका था। Union Home Minister Amit Shah spoke to Lieutenant Governor Manoj Sinha and Chief Minister Omar Abdullah, directing officials to ensure all possible assistance for the affected. Omar Abdullah, who was in Delhi for a proposed statehood protest, cut short his visit and returned to Jammu as the situation worsened. The Lieutenant Governor reviewed the situation directly and ordered immediate relief for affected families in both districts. फ्लैश फ्लड की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। पुंछ में हुआ है, राजौरी में हुआ है, यहाँ उधमपुर का भी हम सुन रहे हैं, और बहुत जानी माली नुकसान हुआ है। हम सरकार से मुतालबा करेंगे कि मौके की नज़ाकत को देखते हुए वो उन लोगों के वास्ते एक रिहैबिलिटेशन पैकेज बना दें। With the IMD forecasting widespread rainfall over the next few days, authorities have temporarily suspended the Amarnath Yatra from both the Pahalgam and the Baltal routes, along with pilgrimages to the Mata Vaishno Devi and Shiv Khori shrines as a precautionary measure. Adding to the disruption, all gates of the Salal Dam were opened, with authorities advising people near the Chenab River to stay away from the river banks. A landslide near Deval Bridge on the Jammu-Srinagar highway has also disrupted traffic, with vehicles being diverted to a single lane as restoration work continues. Amid the flood situation, the opposition BJP has postponed its planned Secretariat Gherao March in Rajouri and Poonch, originally scheduled for Monday. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय सेना, तमाम जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। हमारे पार्टी के तमाम बड़े सीनियर लीडर्स सुबह से ही प्रशासन का सहयोग राहत और बचाव कार्य में कर रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में With rains expected to continue over the next few days, rescue teams remain on the ground across both districts as authorities work to trace the missing and assist families who have lost their homes.